Hello dear students, very good morning to everybody. Let us in continuation of the parts hydroxy compounds, alcohol phenols and one of the remaining part from ethers. That is, we will take this part of the ethers. It is order, say this is here OW and this is nothing but what our ether. This is the last part of this topic. This order ethers. This is a crown ether. So what do you mean by crown? The word is crown is what? This is nothing but what? This is particular name. This for is coming from C. This C for is chemistry. Or is nothing but what? Chemistry. So it is like to this craft, this craft, this craft, like this structure craft, this meaning of the craft, it is nothing but chelation. So the meaning of the chelation is nothing but what? It is for the formation of the ring. Formation of the cycle is there. C. Here the purple C for. Second word is crown is that CROW and is crown. The meaning of this is the crown is there. So what is a crown? The word is coming from this I'm writing here. The word is from CORO and is that. So that is the what I'm writing this COVRE is nothing but this, alright? COVID-19. So yeah. This is what is the corona. So this is what how this meaning of this is the crab is nothing but chelation, it is nothing but formation of the C cycle formation C. Again this from this one is crown from is C. Again what is crown is nothing but a crown like. अब यहाँ पे देखो जो crown जोड़े तो ये कोरोना से मिलता जुलता है ना, यहाँ से इसको मिलता जुलता है. So why this word is coming from? This is the corona. It's what is nothing but C again. What here C again? This is also C again here. Again this is nothing but again the C is here. Again this word so this introduced what is part of this word chemistry. ना sort of is study of this chemistry. तो यहाँ पे इसका मीनिंग इससे रिलेट है क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है, शेप का पार्ट है, इसका और इसका शेप. So that is the word is coming from this is according to this is order crab like structure, ring like structure. This is nothing but what? Crown, and this is word is like from this is the shape like from geometry. That is what crown. तो एक्चुअली जो वर्ड है ये यहाँ से मतलब क्राउन से मतलब द मीनिंग फ्रॉम दिस वर्ड इससे आया. Part of this craft, and this is nothing but study of this crown is nothing but chelation is nothing but ring, and the formation of the cycle is there. So it is nothing but as part from the geometry and the shape. This is like look like into the this is one of the structure, shape, geometry. So first this crown ether I'm talking about. This is the part of your syllabus. This crown ether. The scientist, one of the scientists, Pedersen, and CJ. पेडरसन ना तो काय केला होता, डिस्कवर केला होता, सायंटिस्ट सीजे पेडरसन. यानी हा क्राउन इथं डिस्कवर केला आहे, त्याचा मीनिंग सांगितला आहे त्याने. सो व्हॉट डू मीन? मॅक्रोसायक्लिक पॉलीएथर. मॅक्रोसायक्लिक पॉलीएथर हा त्याचा मीनिंग आहे. इट इज नथिंग बट व्हॉट? The crowd ether is that macrocyclic polyether. So that which contain that is what C linkage. ये linkage उसमें present होती है. So which types of the linkage is present in crowd ether? Such types of the question is asked in the part of the types of the exam. This competitive exam. This is called a CET NEET JEE. इस कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कैसा? विच टाइप्स ऑफ द लिंकेज प्रेजेंट इन क्राउन ईथर. तो याद रखना है CC. So that is look like this is one of the part. This is again what a JEE from. This is the cryptan. The one of the part is nothing but what? The cryptan. What is the cryptans? So like to this is the crown ether. This is the instead of oxygen atom you can take this is the nitrogen atom. This linkage is present in this is nothing but what? A cryptans. So we call this the what is the crown ether? Macrocyclic polyether is known as crown ether. तो ऐसे कौन से टाइप्स है crown ether के वो देखेंगे. फर्स्ट टाइप है हमारा 18 crown 6. इसके बाद है दूसरा वाला 15 crown 4 5. Next one, this third one is that. And that is 12 crown 4.
So this is the part of the crown ether is that. 18 crown, 6, 12, 15 crown, 15 crown 5 and 12 crown 4. What do you mean by 18? What do you mean by 6? I am writing here 6 oxygen atom. This meaning of the 6 is nothing but oxygen atom. The meaning of 5 is nothing but what again? Oxygen atom. So again what the meaning of this 4 is nothing but what? Presence of oxygen atom. 4 oxygen. Therefore, what do you mean by 8? I'm writing this CH2, 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 CH2. That is CH2, CH2. Again CH2, 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 CH2 is there. Here CH2, CH2. Here in CH2, 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 CH2. So what? Linkage here, the CCO linkage. What linkage? CCO linkage. Very, very interesting. CCO, है ना? ये ऐसा लिंकेज होगा. That is the part from this is the macrocyclic polyether. इसमें से सबसे पहला जो डिस्कवर किया, जो कि सायंटिस्ट पेडरसन ने सर्वात प्रथम जो डिस्कवर केला तो होता 18 क्राउन. ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया. फर्स्ट क्राउन ईथर आपको इसको कहते हैं. व्हाट इज दैट? FIRS. फर्स्ट क्राउन ईथर. कौन सा? 18 क्राउन 6. तो इसके अकॉर्डिंग शेप एंड साइज, मतलब इसके शेप साइज से उन्होंने 3 एलिमेंट यूज किए. इन्होंने सेजी पेडरसन ने. तो फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इल्ली ना के रबड़ी कैसे फ्राई करें? फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे शेप एंड साइज, इसका साइज ज्यादा होगा, है ना? सबसे साइज ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज है. तो सबसे साइज ज्यादा है पोटेशियम, तो इसका साइज ज्यादा है पोटेशियम, मतलब 18 क्राउन 6 इसका साइज ज्यादा है. So as according to the shape and size, this is the potassium inside the cavity of the 18 crown 6. The cavity from this is sodium in the 15 crown 5, and cavity for this is the lithium for the 12 crown 4. तो यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम इसका साइज कम है, तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब स्मॉलर रिंग यहाँ पे पार्टीशन करता है. एज अकॉर्डिंग टू द कैविटी, लिथियम का कैविटी है 12 क्राउन 4 के लिए, 12 क्राउन 4 के लिए, सोडियम का है 15 क्राउन 5 के लिए, और पोटेशियम कैविटी इनसाइड द कैविटी ऑफ 18 क्राउन 6. यहाँ पे ये K प्लस है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीजन का नेचर यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो दैट इज द व्हाट hydrophilicity. This hydrophilicity is present between the oxygen and this potassium. Hydrophilicity. What I can say? Hydrophilicity between the atom. This is the lithium as well as oxygen atom, potassium as well as lithium atom. So that is what this is nature is what hydrophilicity. The hydrophilic. ये नेचर है इसका हाइड्रोफिलिक, इसका नेचर है हाइड्रोफिलिक. सो दैट इज व्हाट दिस वन कार्बन कार्बन, इसका नेचर है व्हाट इज दैट? दिस व्हाट हाइड्रोफोबिक. कौन सा नेचर है? हाइड्रोफोबिक, है ना? दिस व्हाट हाइड्रोफिलिक, है ना? दिस हाइड्रोफिलिक. दिस इज व्हाट हाइड्रोफिलिक इज व्हाट दिस व्हाट वाटर लविंग. You can say this water loving. So this is nothing but what to attracted to, but this is what water molecules. That's why this is the hydro. This one of the bonding is takes the hydrogen bonding and one of the another types of the bonding also. So that is nothing but hydrophilic. यहाँ पे positive charge और negative charge, more electronegative atom है, less electronegative atom है, less electronegative atom, more less electronegative atom, more electronegative atom. So इसके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोफिलिसिटी फॉर्म हो रही है. So that is the hydrophilic in nature. और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर. So as a part of according to the shape and size, according to the size of this is the first group element. This is lithium, sodium and potassium, alkali metals. So lithium for 12 crown 4, sodium for 15 crown 5, and this potassium for the 18 crown 6. So these are the structure of the crown ether as according to what. तो इसमें से मैंने बताया कि 18 crown 6 क्या है? फर्स्ट क्राउन ईथर है. 18 crown 6 क्या है? फर्स्ट क्राउन ईथर, मतलब वो फर्स्ट डिस्कवर किया था. So what is the use of this crown ether? इसका एप्लीकेशन क्या है? यूज क्या है? Yes. So what is use? I'm writing here. Use. क्या यूज है? पहला यूज act as कैटालिस्ट. कैटालिस्ट बोल के इसका काम किया जाता है. रिएक्शन में
इंडस्ट्रियल पर्पज में। ओके, उसके बाद रिमूव इट इज यूज टू increase solubility to increase the solubility in ionic salt in non-polar solvent थर्ड एप्लीकेशन, पहला है कैटलिस्ट वोल्टेज होता है, दूसरा है टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी इन आयनिक सॉल्ट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट टू रिमूव radioactive elements from radioactive decay. So the next use, particular 18 crown 6 is used to extract cesium and strontium। ऐसा इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए 18 crown 6 का यूज किया जाता है। So what is the application? Here use of the crown is a catalyst to increase the solubility in ionic salt in non-polar solvent। Okay, उसके बाद to remove the radioactive element from the radioactive waste। Then last application देखने वाला, this is the particular 18 crown 6 first crown ether where used to extraction is used what? This 18 crown 6 is used for the extraction of cesium and strontium। ये हो गए इसके application और uses। So this part of this is the crown ethers we have studied at the last from the